here. Which component? Let's go to our variable component. Now, just a normal variable, right? How we used to create a variable. So we used to create a variable like this. And if I have to bind this variable to the text box, I used to bind that by using ng model, right? Where we have done that over here. Now this is I have done by using template form, correct? If you are using ng model, means it's nothing but template form. Now, just like this, I have one more scenario. Like I need a text box. I have a text box and I need to bind it with the reactive form. But I just have a single field. So shall I create a form group, or is there in another way? See, just like how we have created this variable and this variable we have binded it over here. Just like that, I have a text box and I need to bind that text box with my reactive form. Okay. So is it mandatory that I have to create a form group and inside that control, then that control I will bind it? Or is there any another way? There should be, but I don't know. See, let's say, let's go at the vendor component. In vendor component, we have shown the table, no? Yeah. If we go to the vendor component, why table is not visible? Okay, list view. Fine. So here you can see above vendor table we have in vendor table we have list. Let's say above table here you need the search box. Okay. So let me just comment everything. Above this, I just need a search box. By this scenario, you will properly understand what I'm explaining. Input text and here I will have placeholder search. Okay, this I'm talking about. So we have a table, and above table we will have a text box, and once I search I should be able to search it. So I have this single text box. It's not a form, right? But normally what we can do, we will create a variable and bind it by using ng model. But instead of ng model, I have to use form group over here. So what we will do, so in .ts we will first implement reactive form module is there. So what we will do, search form we will create colon form group is equal to new form group, and inside that form group we have to create control, correct? Search text colon new form control, like this, correct? Then this form group we need to bind it on this div, parent div. So form group, like this. Then on this text box we will bind form controller name. This is what you know till now. Everyone clear till now? हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स था, राइट? उस टेक्स्ट बॉक्स को मुझे बाइंड करना था एक वेरिएबल से, राइट? बट instead of using template form, I wanted to use reactive form, right? Selected tab name, where it is, list. ठीक है, मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स था. नॉर्मली हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वो एनजी मॉडल से बाइंड करते हैं. बट इंस्टेड ऑफ दैट आई डोंट वांट टू यूज template form, I want to use reactive form. So what we do, we have created a reactive form. Inside that we have created a control. This reactive form we have binded at the parent div, and inside that to the our element we have binded form control. Everyone clear till now? Yes. Okay. But
It's just a simple one input text box, right? So why, instead of creating this whole group, whole form group, I can directly create the control also. So there is no need of this. Colon, form control. Understood what I done? See, what I told you previously, same thing what would have done in template, a normal variable we would have created, we would have entered it with the input text box. Just like that, in reactive form also, we can create an individual control also. This is individual form control. This control is not connected with any form group. Okay, let's write it again. Search text colon. It's a normal variable, but inside this variable, what we are going to store? So form control. So data type, right? Then it's a form control. Form control, it's a class. So we need to initialize it. So new form control. We will initialize with empty value. That's it. Now you don't need this form control. But if I save, you will get some error. Let me show you that. See what it is saying? Form controller name must be used with a parent form group directive. What's the meaning of it? इसका क्या मीनिंग है? अरे एरर भर के बताओ ना. फॉर्म कंट्रोलर नेम मस्ट बी यूज विथ अ पेरेंट फॉर्म ग्रुप डायरेक्टिव. व्हाट डज इट मीन? तो It should फॉर्म be used कंट्रोल within से पहले form फॉर्म group. ग्रुप होना चाहिए. See, if we are using form controller name, then it should be inside a form group only. We cannot use form controller name independently. Okay, but here we don't have form group. We have an independent control, correct? So if we have a thing like that, then instead of this control name, or what is it, form control, just form control, and that too in property binding. Save, and if you see, we won't have that error. So before what we were using? Huh? Form controller Right name. now we use form control. Form What control was the name. attribute name before? Form control name. Okay. Like this we used to use, na? Okay. Okay. So if you have an individual control without form group, this is how you bind, by using form control, not the form controller name. Form controller name can be used inside a form group only. Clear? Yes. Most people don't know this, and this is a very interview question after 3 years. Because as I said, this is the most popular scenario. Above the table, you have a search box, right? It's a single search box. For a single search box, why you will create a form group? Understood, everyone? Yes. Yes. Okay. Fine. Shall we move ahead? Or anyone having any doubt? Fine. No Let's doubt. go to last component. Now, dynamic validation. Okay. So now in this scenario, we will change our form little bit. Let's say over here, we will have a checkbox. Is active. Let's add a new field. Form control. We will go with false value because Boolean. Then is active. After that, we need last. If it is active, we will ask last. This is an employee, na? Last current project.
Okay. After is active, we need object name. Okay. So see, just see the UI, then you will understand. So we need checkbox. For a checkbox, we won't have this class. Now, what is my scenario? If this checkbox is true, then only my current project name text box will be mandatory. So this text box validation is dependent on this checkbox. If the checkbox is checked, then only this control is mandatory. Otherwise, it is optional. Understood? अगर ये चेकबॉक्स चेक है तो ही ये करंट प्रोजेक्ट नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स मैंडेटरी है, अदरवाइज इट विल बी ऑप्शनल. मतलब ये चेकबॉक्स चेक है तो ही इस फील्ड पे मुझे वैलिडेशन दिखनी चाहिए, अदरवाइज नहीं दिखनी चाहिए. क्लियर? Yes. Okay. Now, how Yes. do we do this? So, when we are initializing form, is active is by default false. So, do we need to add validation over here? No. Right? Because if it is by default, if it is true, then only we should have added the validation. But by default, it is false. So by default, we don't need to add the validation. But once checkbox value got changed, then we need to add the validation. Okay. So now click, change on active change. Fine. Let's create this function. Now over here, new thing. Sir, I have a question over here. You Let right me now complete now first. explicitly. Okay, sorry. Other might get disturbed. Let me complete, then we can go with queries. Okay. See what we have done. We have created two new control, is active and project name. This control we have binded to our respective element also. Once the checkbox value get changed, I need to write some event. So that's why I have used change function and I'm calling this function. Okay. Now over here, what we need to do, we need to read particular control value, means is checkbox is checked or unchecked, right? So constant check value. Now what I need to do, from my form, I need to read value of this control. Can you please on mute? Please be on mute. Voice is echoing. So what I need to do over here, I need to check the what value we have in the is active control. So for that, how do we read it? So this dot employee form dot controls square bracket. Then after that, we have to provide our control name, that is active dot value. Okay. This is one way to read a particular control value. Is there any another way? Is there any another way? Yesterday we have seen. Get method. Instead of reading, instead of selecting a control like this, other way is this dot employee form dot get. And here we have to pass the control name. Yesterday I have explained this and then value. Okay. One way of selecting particular control is this, other way is this by using get method. Clear? Okay. Now here we need to write the if check. If, let's say I'm using this, if active val is true, either we can write this also. Okay. Let's just add a debugger and let's test this first. If I change, see my function got called. Then see, wait, why we got false value? Vice versa, it will be here. Let's check. Now we will get. No, both the time we are getting false value only. How come? How we are getting false value?
We created control, but we didn't bind it. City is only there. Okay. Here also. Now, if I change, see, here also I get true value, here also I get true value. Okay. Now, let me check and vice versa also. See, false value we are getting. Okay. Now, so if the checkbox is checked, we will get true over here. So if it is true, now we have to add the dynamic validation. Okay. So this dot employee form dot controls square bracket. What's the control? We have to add the validation project name. So this project name will go over here. Then what we need to do? Which method I have to use? Add a validators. Right? See over here, add validator. What type of data it needs? This function? Function. Function. Where is function? Array. Array na? See na symbol. Wherever you get this symbol means it needs array. Okay. See, whenever whatever the pre-default method we have, just by using this mouse and you get the pop-up, you should understand what type of data it needs. Right? Otherwise, for every small thing, you will be using ChatGPT or Google. Right? You need to understand what this function need. It is saying over here, we need validator array. Okay. Here also we provide array na, because validation can be multiple on a single control. Correct? Okay. So Either one function or array of function, right? yes. So validators dot, which validation I need? Required. Okay. So by this we have added the validation. But after that, we need to, we have added the validation, but reactive form is not, reactive form does not support two-way binding. So we added a validation to this particular control, but to update it to the form, means to the HTML, we have to use one more thing. So this dot employee form dot specific control update value and validity. Okay. Whenever we add or remove validation, this line should be there, because this line will inform your template that validation got changed. Okay. Let's quickly show the validation also over here. Then only we can understand properly. So text hyphen danger at the Reactive employee form dot controls square bracket single quote our project name dot errors question mark square bracket required. Okay, so if it is there, we will show a span. This is required. Let's save and check. Okay, so by default, we don't have any validation. If we check, see, validation is getting triggered. If we uncheck, okay, we didn't write to remove the validation. Okay, see it properly. On the page load, we don't have any validation. But once I check, see, validation started. Now, vice versa, if I uncheck, we need to remove that validation. Okay, now in the else block. So this dot employee form dot get our control name, that is project name dot. Which method I should use? Which Clear method? validators. Clear validator. Just like for adding validation, we had add validator, but for removing, we have remove validators also. Now
We have removed validator also, right? And we have clear validator also. So what might be the benefit or what might be the difference between these two? We have two things to remove the validation. One is this remove validator function, another is this. Why we would have two ways? Something must be there, right? If we have two ways to remove the validation, what might be the difference? This is common sense question. So Why, remove is just like one validator we have to remove. right? So Clear is clear means whatever. whatever. For a one control, we can have any number of validation, right? So if you want to clear all the validation, you will use this clear validator. And if you want to just remove particular validation, you will be writing like remove validator. And there you have to specify which validation you have, which validation rules you have to remove like this. Understood? After that, this line should be there. So instead of having it if and else, we can move it but at the end. Clear? Let's try this. Okay. See. Understood? So this is how Yes. we add dynamic validation. Based on any control, we change the validation of any another control. Clear, everyone? Yes. Yes. Okay. So now you will understand why in big MNC project, everyone will use reactive form. Now to do the same thing in template form, there is no by default something. We have to write custom code for it. Now the problem with custom code is everyone will write something new. There is no uniformity. Getting it now? In template form, we don't have anything like this that will add a dynamic validation based on any object or field value. We have to write our custom code. So if every developer will have some different way of thinking, everyone will write something unique way in different way validation. So there is no uniformity in the project. Like hiding a validation, someone is doing something else, someone is doing something else. But in reactive form, we have a different certain sets of way to handle some things. So that's why in a big project, everyone will go for reactive form only. Clear? Yes. Okay. So two things we have seen. First, how do we read a text box value in a reactive form? So this is what from control, from your form group form control, which control you will select and then value. This is how you read the control value from the reactive form. This is how you add the validation. Okay, this is how you remove the validation, and this line should be there to update the value and the validity of the form. Before that, we have seen how do we create the individual control, just the form control, and bind it. In HTML, we bind it by using form control instead of form control name. Clear? Now, everyone clear till now? Shall we move ahead? Yes. I have one question, sir. Yeah. So right now we made a change event, right, on input. Hmm. But let's say if we have 20 controls and for Hmm. each we have to make a change event, or there is another way. See, it's based on, we have a generic way also, but in just, let's say you have around 50 field or all these field, you need to write the change event. And in each function, in each, let's say on name change, you need to write some different logic. On city change, you need to write some different logic. So can you have a common function for that? Tell me. No. Because again, in your common function, you will have so many if and else statement. It's not good, na? For every input element change, you are having some different logic. So why to keep it in a common function? Right? We can have common function on form value changes. We can do that, but it's not useful because again, we have to write if else statement. Okay, got it. Yeah. Anyone else Thank you. having question? Fine. Now, on our
checkbox change, how we have called this function by using change event. But whenever we are working in reactive form, we should not use this function like this. Change, right? So instead of that, we have something new, that is we can subscribe to the changes happening in this control. What I said, we can subscribe to the changes happening along to all the controls. Okay. So how do we write that? Means instead of writing this change event, I won't write this over here now. Okay. I won't write change function in my HTML, but still I need to write the code once the checkbox value get changed. HTML में मैं change event तो नहीं लिखूंगा, लेकिन जैसे ही मेरा is active change होता है तो मुझे कोड लिखना ही है. So instead of writing this change event over here, there is another way, that is, let me write. So in constructor, this dot employee form dot controls, we have to get our specific control is active dot value changes. Okay, value changes. What type of data it returns? Value changes? Boolean. No, no. No, observable. Observable. See, observable. Okay. Okay, observable. If something is returning observable, what we can do? Subscribe. Right? So we can subscribe to it. Here we can add a Boolean value, because what type of is active is checkbox. So we are going to get Boolean value. Okay. Let's add a debug over here. Just see this. What we did in HTML, we didn't write any change event, right? But in constructor, we are subscribing to the value change. Means whenever this control value get changed, this subscribe will execute. See now. Uncheck, we got it over here false. Check, see. Getting it? Understood? So anytime that control value is getting changed, we are getting our subscribe executed. Means now this function, we can call it over here, right? So same thing will happen. Once I check, 7:30. this base, be on 7:30. mute. 7. Be on mute now. Okay. So my checkbox value got changed. I'm calling this function. See, I got the validation. Again, if I uncheck, again my subscribe got called. In subscribe, I'm calling this function. Again, my same logic will trigger. Clear? Understood? So in Yes. reactive form, you can always monitor for the value changes by subscribing to it. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Now, everyone clear first this question way? Yes. सबको क्लियर है ये अगर क्लियर है तो ये आगे का क्वेश्चन समझेगा. किसी को डाउट है इसमें? No, sir. ठीक है. अब ये क्वेश्चन सिर्फ इंटरव्यू वाले सॉरी जिनको एक्सपीरियंस है उन्हीं के लिए है. व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ डूइंग लाइक दिस एंड द राइटिंग द चेंज इवेंट? ये कब करना है और ये कब करना है? एक्सपीरियंस. वैल्यू चेंजेस कब लिखोगे? when you will write value changes and when you will go for a normal change event. Okay. If we are listening this change event in other components How you can listen in other component? by making this by putting this code in a service, Okay. then we can put this code in the service, and from the service No, we still can. that won't answer my question. When you will listen to this value changes like this, or when you will write the event?
within the component itself, we can do both the approach, but across the component communication between two Yeah, across component, the we have to. components is okay, but that's not the reason. That's When what you I will have write in my event, mind. when you will write event, and when you will write like this. Okay, so see, I will tell you the When the benefit. API get, maybe from when the API, from the API we get the response, Hmm. at that time we can use this approach. See, let me comment this. And now, once the city value or what we will tell. Okay, so what we will do, when the city value get changed, okay, then I need to what do we say? If the city, if user consider this text box, okay. So if city value got changed, if the city is not empty, then this checkbox should be checked. If the city value city has the value something, then this value should be checked. If city doesn't have any value, this should be unchecked. Okay, this I need to do. अंडरस्टूड एवरीवन. सिटी के टेक्स्ट बॉक्स में अगर वैल्यू है तो मुझे ये चेक बॉक्स चेक करना है, अदरवाइज अनचेक ही रहेगा. ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड है, सिटी के ऊपर. क्लियर है सबको टास्क क्या करने वाला हूं? Yes. ओके, Yes. अब सो मैं यहाँ पे नॉर्मल मेरा चेंज इवेंट लिखता हूँ ऑन सिटी चेंज. हम कर क्यों रहे वो याद रखो, नहीं तो इसके चक्कर में वो भूल जाओगे क्यों कर रहे अपन. कांस्टेंट वैल्यू सिटी डॉट वैल. यहाँ पे एक चेक लगा देते हैं, इफ वैल फिजिकल टू एम्प्टी है तो हमें कुछ नहीं करना है. ओके, वाइस वर्सा करना है ना. इफ नॉट इक्वल टू एम्प्टी है तो हमें क्या करना है, इज एक्टिव फील्ड की वैल्यू चेंज करना है. बाय डिफॉल्ट इट इज फॉल्स, सो इफ सिटी में अगर वैल्यू है तो हमें ये वैल्यू चेंज करना है. सो दिस डॉट, अभी यहाँ पे और एक नया टॉपिक भी आ रहा है कि हाउ डू वी चेंज द कंट्रोल वैल्यू फ्रॉम डॉट टीएस. सो दिस डॉट एम्प्लॉय फॉर्म डॉट our control your bracket single quote, our control name will be active. We have to change the value of this active. Active. Dot set value. Okay, whenever we have to change the control value from dot ts, what do we use? Set value. So here we got the control, now we have to change its value, so we have a set value method. So we have to make it true over here, and in else we have to make it false. Okay, let's try. See, my checkbox value got checked, but my project name validation are not triggered. Now, if we are using change event, your scenario got broke. See, what was our rules? Our project name should be mandatory if the checkbox value is checked. Correct? Right? Yes. But now checkbox value is getting dependent on over here. My checkbox got checked, but my project name is not mandatory. So this is a defect, correct? Yes. So With that's update why, value and value and validity, we can do it after no. that. Acha, let's try that. No, but still again the same thing, na? Moving the same thing. Either you will call it from over here or you will write that piece of code over here, same thing. So change event. Now, if I refresh, if I directly change, this validation is working fine, right? But if I'm changing the city value and my text box value got changed, then it's not triggering because we have written a change event over here. Unless this is not changed,
our validation is not going to trigger. But this should not be like this, na. Whenever checkbox value get changed, we should have this. Either we are checking it or this checkbox value is getting changed on any another value. So if I, instead of writing this change over here, if I uncomment this, form value changes. Let's try. See, now it is working properly. Understood? Even if I didn't change it manually, we just change the city value. See, once the checkbox value got changed, this is getting triggered from this also, and by doing this also. Both the way it is working proper. Understood? So When where you is the then like why it's not happening with the first approach then? see in first approach, what we have change it unless user change the value, because to add the dynamic validation, we have written the logic in this function. When this function is going to call, when we change the checkbox value, when user actually will click that checkbox, then only this function will trigger, na? Correct? Yes. Yes. When change event will trigger, when user actually interact with it, not control value change होने से change event नहीं trigger होने वाला. Change event कहाँ का है? HTML का है ना, एंगुलर का थोड़ी पार्ट है. जब तक ये यूजर ने अगर ब्राउजर यूज करके ऐसी वैल्यू चेंज किया, तब जाके मेरा चेंज इवेंट ट्रिगर होगा. बट हमने क्या किया था पहले सिनेरियो में, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चेंज होने पर हमने कंट्रोल की वैल्यू चेंज की. चेंज इवेंट ट्रिगर नहीं होने वाला उससे, राइट? सो सिनेरियो समझा अभी सबको? अभी फिर मैं रीजन बताऊंगा. सिनेरियो समझा सबको क्या हो रहा था? अगर हम चेंज कंफ्यूज हो इवेंट के गया। ऊपर डिपेंड है, ओके, हमने अगर सब इवेंट लिखा है, if we have just written the event and this control value is getting changed from somewhere, this event is not going to trigger. Okay, but if we are listening to the value changes from wherever this control value get changed, either from the browser or from any code, if this value is getting changed, this function will trigger. Okay, Oh, okay. understood? Now I understand. That's explicitly the user is doing change, but Right. on a certain सो चेंज control. इवेंट कब होगा कि जब तक यूजर यहाँ पे क्लिक नहीं करेगा, तब तक ये इवेंट ट्रिगर नहीं होगा. इस कंट्रोल की वैल्यू चेंज होने से ये फंक्शन ट्रिगर नहीं होने वाला. जब तक यूजर खुद से वो चेकबॉक्स की वैल्यू चेंज नहीं करता, तब तक ये इवेंट ट्रिगर नहीं होगा. राइट? Yes. तो Got it. इसलिए Thank you. अगर आपको पता है कि आपके कंट्रोल की वैल्यू अपार्ट फ्रॉम चेंज और कहीं से भी चेंज होने वाली है, तो वी हैव टू गो विथ वैल्यू चेंजेस. ओके. हाँ, वाइस वर्सा, अगर यू नो कि इस कंट्रोल की वैल्यू यही से चेंज होने वाली है, डॉट टीएस में कहीं से भी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, देन यू कैन स्टिक टू योर चेंज इवेंट. Mhm. क्लियर? This is the Zoho interview question I got asked. Okay, Zoho में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि when do we have to go for change and when do we have to listen to the value changes. Okay, 5+ के लिए था वो. 2+, 3+ के लिए नॉर्मली ये पूछना ही नहीं चाहिए. पता होना चाहिए आपको, क्योंकि इजी है. एक बार आपने अगर प्रॉपरली रिएक्टिव फॉर्म पढ़ा है तो उसके बाद ये समझ में आना चाहिए. मैंने सर सिनेरियो एक बताया. पैच वैल्यू भी था, वो कब यूज करते हैं? क्लियर है सबको ये सिनेरियो? चेंज कब करना है और वैल्यू चेंजेस कब करना है? Yes. जो पहली बार एंगुलर पढ़ रहे हैं उनको नहीं समझा, ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको समझना चाहिए ये. किसी को डाउट है कुछ? No. ठीक है, जस्ट गिव मी 2 minutes, आई विल बी बैक.
Okay. So value changes. Value changes when we have to use, whenever we have to write code of any control values get changed. Okay. Let's say address got changed. Okay. Either from .ts or from HTML, I need to write a code. So you will write like this. Okay. What specific control you need to write, you will write like this. Let's say overall form value got changed. There also you need to do something. Okay. If overall form value got changed, not specific to control, from your form, any control value got changed. Means let's say project value get changed, address value get changed, city name, anything got changed, you need to write some event, not specific to control. So we have this dot employee form dot value changes over here also. On form level also we can write value changes, and on specific control also we can write the value changes. Okay. Let's write debugger. See. Debugger is not. See. Which got executed? Form value. Okay. If I change the city, this got triggered. If I change this got triggered, and then this got triggered. So both the subscribe got triggered in case of is active. Just see it properly. One more quick question is here. Once I'm changing the checkbox, this got executed once, continue. This got executed once, continue. Again got executed. Why it got executed two times? Form value changes. Why it got executed twice? Got my question? Because that's also Exactive is a part of a form group. Okay, fine. I'm changing name. Only once it is executed. But if I'm changing the checkbox value, why it is getting executed two times? First, second. अगर मैं चेकबॉक्स चेंज कर रहा हूं तो ये फॉर्म वैल्यू दो बार क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है? अरे in value change of is active, we are changing something over here also, na? Yes. Right? So its change event also will trigger, na? See, on change of this, we are changing the validation of this field. Again, for this field, for this validation change, value and validity we have triggered, na? See this. Because of this, again, form value will get changed. For every Okay. value change in control, your form value subscribe will execute. ये कब कब एग्जीक्यूट होगा? जब तक तुम्हारे फॉर्म में जितने भी कंट्रोल की वैल्यू चेंज हुए तब तक ये एग्जीक्यूट होगा. ओके. अब देखो, पहली बार मैंने चेक किया, अब ये क्यों ट्रिगर हुआ? क्योंकि मेरा इज एक्टिव का फॉर्म चेंज हुआ. कंटिन्यू. अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी होगी तब तक. उसके बाद प्रोजेक्ट नेम की वैल्यू और वैल्यू अपडेट हुई है, इसलिए फिर से एक बार एग्जीक्यूट हुआ. अभी क्लियर हुआ? दो बार क्यों एग्जीक्यूट हुआ? Yes. Okay, fine. So overall form level also we can subscribe to the value changes. Okay, this is overall form value changes and this is to the specific control. Clear? Okay. How do we change the particular control value? By using set value. If we have to change particular control value, we have to make use of set value method. Okay. Now overall form value, how do we change? So there are two ways to do it. This dot employee form dot patch value. In patch value, what type of data it needs? Patch value. What type of data it needs? Patch value. Key value pair. Key value pair. See na? Object. Okay. So here key
value. Let's say on the page load, I want to assign address Nagpur. Fine. Let's save and check. Page should load with address Nagpur. See, got it? Patch value worked. Just like that, we have this dot employee form dot set value. Here also you can see key value, same type of data it needs, right? Let's try the same thing. Address colon Pune. Let me comment this. Okay. Error is there. See, both the function has same prototype. Patch value also has the key value pair data. Okay. And set value has the same set of data. दोनों फंक्शन को सेम टाइप ऑफ डेटा चाहिए. पैरामीटर नथिंग बट फंक्शन है तो उसको पैरामीटर सेम है दोनों को. देखो यहाँ पे भी ऐसा ही है और पैच वैल्यू पे भी सेम है. Then in patch value, if we pass one object, it is working fine. But in case of set value, it's breaking. It's not working the same. Even though दोनों फंक्शन को पैरामीटर तो सेम है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है. देखो पैच वैल्यू के टाइम पे अगर मैंने एक ही प्रॉपर्टी भेजा तो वो एरर दे रहा है. और ये एरर क्या है? क्या है एरर? अपने पास नेम नाम का कंट्रोल है तो वो बोल रहा है कि यू हैव नॉट मस्ट सप्लाई वैल्यू फॉर फॉर्म कंट्रोल विद द कंट्रोल नेम. इट इज सेइंग कि नेम वाला जो कंट्रोल है उसको भी वैल्यू दो. फाइन. सो लेट्स से उसको भी वैल्यू देते. नेम कोलन आदित्य. लेट्स सेव. अभी चेक करते. स्टिल वी गॉट एरर. अब क्या बोल रहा है? सिटी के लिए भी वैल्यू दो. सिटी को भी देते हैं. लेट्स सेव. स्टिल वी गॉट एरर. अब बोल रहा है इज एक्टिव को दो. अब समझा पैच वैल्यू कब यूज करना है और सेट वैल्यू कब यूज करना है? यस. क्या डिफरेंस? पैच में ये कर सकते हैं लेकिन सेट करते टाइम हमें जितने भी हमारे फॉर्म में सब डेटा हम पास करें. नहीं, फिर से बताओ. पैच वैल्यू में हमने एक ही फील्ड के लिए डेटा किया था तो वो वर्क हो रहे हैं लेकिन सेट नहीं ना. वैल्यू में अच्छा हाँ सॉरी हमारे पैच वैल्यू बराबर. और सेट वैल्यू में पूरा जितना हमारा ऑब्जेक्ट का है उतना सब वैल्यू हमें पास करना पड़ेगा. ओके. क्लियर एवरीवन? अभी भी ब्रेक हो रहा है यार ये. इसको अभी इसकी फैमिली लिस्ट चाहिए होगी क्योंकि फैमिली लिस्ट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ फॉर्म ना. सो अब इसको फैमिली लिस्ट अपन ने क्या किया था? ये फॉर्म ग्रुप उठाता हूँ मैं और ये पर फॉर्म कंट्रोल लेवल पे हम सेट एंड पैच दोनों यूज कर सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग. एक मिनट. ओके. अब मैंने नाउ व्हाट आई हैव डन in my employee file, whatever the controls were there, I have provided value to all of it. Okay. Now if we save, the error must supply value from controller index 0. We have provided a value. It is saying like this. Must supply a value for form controller index 0.
किया तो है वैल्यू सेट, इट बी वेट, मैं ये रिमूव करता हूँ फिर मैं बता देता हूँ क्या है। ओके अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ फॉर नो, अब ये दूसरा एरर चालू होगा। पुश 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 कंस्ट्रक्टर में हमने कॉल किया था ये फंक्शन सेव। ओके सो देखो अभी प्रॉपरली इनिशियलाइज हुआ। सो overall form, whenever we have to update the overall form value, we have two ways, patch value and the set value. When we have to go for the patch value, when we should use patch value? When we have to update the whole form group. No, vice versa. Patch value. When we Patch, want to, Oh, sorry. right? Patch when we, means something, yes. right? So if from your form you just need to update one or two control, then you will use patch value. Set value method needs all the control value, then only it will allow you to update. So whenever you have to update all your form value, then only you will use set value. If you want to update one or two control value, you will go for the patch value. Clear? So ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये ऐसे दिखाया एक एक करके। सो पैच वैल्यू नाम में ही देखो पैच, पैच वर्ड हम नॉर्मल इंग्लिश में कब यूज करते हैं कि इफ समथिंग बिग इज देयर और उसमें कुछ ब्रेक हुआ है तो उसको पैच करते हैं अपन, करेक्ट? प्रोडक्शन में क्या जाता है अपना, पैचेस जाते हैं ना, पूरा एप्लीकेशन फिर से बिल्ड करते हैं क्या अपन, कुछ बिगड़ा है उसी को ठीक करना है, राइट? वहां पे अपन नॉर्मली पैच वर्ड यूज करते हैं। सो इन रिएक्टिव फॉर्म पैच मींस तुम्हारा बहुत बड़ा फॉर्म है, उसमें से एक दो कंट्रोल की ही वैल्यू चेंज करना है, सो यू विल यूज पैच वैल्यू मेथड। बट व्हेन यू हैव टू change the whole form value, you will go for set value. Clear? Understood? Yes. Those who are learning Angular for the first time, it might be hard for you, but at least याद रखो कि ये भी मेथड है। समझा नहीं समझा थोड़ी देर प्रोजेक्ट पर में सर फिर से ये, कंट्रोल लेवल पे दोनों कर सकते हैं ना? हाँ जैसे 47 नंबर लाइन और 49 नंबर लाइन हाँ पे, हाँ वहां ओके पे दोनों यूज कर सकते हैं ना? यस। ओके। सो क्लियर है सबको पैच वैल्यू और सेट वैल्यू का डिफरेंस? एनीवन हैविंग एनी डाउट? सोचो किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, एक लास्ट टॉपिक बचा है अपना फिर रिएक्टिव फॉर्म का। नो वन हैज एनी डाउट? सर सेट वैल्यू में भी सिंगल वैल्यू आल्सो कंसिडर ना? सेट वैल्यू में सी, if you are using set value on a form, then you need to pass whole form value. But if you are using set value on a particular control, then just specific value. This is you are updating a particular control value, see, but here you are updating the whole form value. So over above the whole form, if you are using set value, you need to pass all the key value pair data, whatever the control you have. Okay? ओके सर। Yeah. Anyone else having any doubt? Fine. Let's move ahead to the last topic. Now, creating custom validator. See, validators.required, validators.min length, max length, email. These are pre-default validators we have got. But sometimes we need to create our custom validator, our own rule of validation. Required, min length, ये हमारे पास by default है. But ऐसे ही हमें खुद का अगर validation का rule set करना है तो that is called custom validator. Okay. So now for that, I will use the best example is that password and confirm password. Okay, for all 6
JN कमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आता रहेगा। और ये सेट वैल्यू भी ऑन करना पड़ेगा। Okay, so see, I have two field, password and confirm password. Now I need to write a validation where whatever the value I enter in the confirm password should match to the password. Okay, now in Angular reactive form we don't have something by default to handle this. Okay, confirm password, this text box validation rule will be like whatever the value we put over here, same should match it over here also. That's the one rule. Understood? इस टेक्स्ट बॉक्स की वैलिडेशन क्या रहेगी कि इस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू रहेगी वो सेम वैल्यू यहाँ पे चाहिए, अदरवाइज एरर दिखना चाहिए। क्लियर है सबको? यस सर। टास्क समझेगा तो मैं क्या पढ़ाऊंगा वो समझेगा। टास्क क्लियर है सबको? यस सर। इसमें कौन से वैलिडेशन रह सकते हैं कंफर्म पासवर्ड पे, बताओ। Yes, sir. One capital letter, one small letter, one राइट, दैट इज number, पैटर्न। that is pattern. पैटर्न वी कैन हैव। अपार्ट फ्रॉम पैटर्न, Minimum length or maximum length. that will come in the pattern only na, when we create the pattern there only we will write minimum length, max length, special character, everything in the pattern. Then what else validation we will need on confirm password? Required, right? But these two validations are not enough. Third validation will be, this is confirm password field na, so whatever, let's say I tried 1122 over here, so this should also have 1122. If I pass 3, it should show the validation like doesn't match with the password field. Now got it? Okay, so for this we have to create a custom validator. Okay, so custom validator is very important one. If you are applying after 3+ years, you are supposed to get this question. Okay, let's try this now. Those who are saying Angular for the first time, this might be a little bit hard for you. Even if you don't understand, it's okay. Okay, now for doing this, let's close it. So we have this class, right? After this class, I'm creating one more function, export function check password validation, sorry, confirm, no? Confirm password validation. Okay, to this function, we will have a parameter that is form, data type form group, whole form group we will send. Okay, now inside this, we need to read the value of particular control, that is constant password. Password, first we have what logic we are going to write it over here, what value we have in the password matches with the confirm password or not. So form dot get, what control we need to read? What's the control name? Okay, we didn't create the control. Password confirm password new form control. Okay, so we have created two control, password and the confirm password. So over here we have to need password dot value. Just like this, we need to read the value of confirm password also. Confirm password control name. Okay, now here we have to write return. What you have to return, what you will do? If password triple equal to or double equal to confirm password. If it is same, we will return null. Else we will return an object. There we can say mismatch. True. Okay. So we have created a custom validator function. This function has a parameter of type form group. Whole form data we will send it over here. Then we are reading the value of password and the confirm password. We are checking if both are same, we are returning null.
But if both are not same, we are returning an object. With that, we have a property mismatch. Okay. Now, how do we use this function over confirm password? Guys, be on mute. Vikrant. अरे क्या? Please be on mute, okay? So in confirm password, first validation will be, let's say, validators dot, sorry, array validators dot required. Okay, then let's say that pattern or anything might be there. After that, second validation. So first array, then validators dot colon. What's the function name? Check confirm password. How do we pass it? Validators are required. We have pass. How do we pass this? It's a function. याद है किसी को, किसी ने कुछ किया है कभी? Sir, after employee form object, after a comma, we pass a array and where we put that custom validators. After this. No, sir. On So line number 24. here it is suggesting. Yeah. Let's try. डायरेक्टली पास कर सकते हैं सर, वैलिडेटर्स नहीं लगाना आई थिंक। डायरेक्टली कैसे? इसी के अंदर, मतलब एरे के अंदर ही। ऐसे? नहीं, हाँ हाँ ऐसे ही करना, वैलिडेटर्स नहीं लगाना आई थिंक। What is it saying? It is giving error. अभी भी दे रहा है। Sir, on line number 24 after object. इसके बाद? ऑब्जेक्ट। After object, sir. इसके बाद? हाँ। फिर कैसे पता चलेगा कौन से कंट्रोल? अच्छा हाँ, ओवरऑल कंट्रोल पे ही ऐड होगा। Right. फॉर्म लगाया हमने। No, sorry, in array. It is. सेंड करते हैं इसको। फॉर्म कंट्रोल वैल्यू हो गया, फॉर्म कंट्रोल स्टेट हो गया, पासिंग वैलिडेटर फंक्शन। What's the data type of it? Export function, we have corrected it. Let's chat GPT, टाइम वेस्ट नहीं करते। आई थिंक इंडिविजुअल कंट्रोल के आगे लगेगा ये। इंडिविजुअल कंट्रोल के आगे लगना चाहिए। How to add custom validator function in form group? देखो उसने सेम ये दिया, तो ये वेल नोन एग्जांपल है। सेम लॉजिक लिखा अपन ने, पासवर्ड की वैल्यू निकाली, कंपाउंड के पासवर्ड कंपेयर किया, नल, अदरवाइज हमने कुछ ऑब्जेक्ट भेजा। कैसे लिखा इसने? सेम ही तो ट्राई किया था अपन ने। सर हमने वैलिडेटर्स का की वैल्यू नहीं बनाया था, डायरेक्ट हम फंक्शन पास कर रहे थे, दैट इज द रीजन। वैलिडेटर्स की वैल्यू नहीं बनाया था, इसके बाद कॉमा वैलिडेटर्स कोलन। एरर क्यों दे रहा है? In line number 24, we using square brackets only. सर आपने जो बनाया है ना फंक्शन, वो टीएस के बाहर बनाया है, फाइल के बाहर, मतलब ऐसा तो नहीं है उसमें एक्सपर्ट कुछ? लिखा है ना।
एक्सपोर्ट फंक्शन एक्सेस हो रहा है, यही पे एरर दिया रहता है उसने, देखो Sir, as we seen on the response of Af- GPT, After curly braces, they you are, can work. Yes. after Need to curly add it braces on on number try line to number deploy. 24. Yes. कर्ली ब्रेक, अच्छा Line number कर्ली ब्रैकेट के 24. बाहर Yeah. ही है, फॉर्म के बाहर ही है। नहीं सर, हम भी उस पे कंट्रोल पे लिख रहे हैं जी। एरर दे रहा है यार, क्या हो रहा है? टाइप ऑफ वैलिडेटर्स आर स्पेलिंग गलत है। parenthesis इधर on form function after function. Yeah. नहीं ना, Sir, it's not object, it's a array. Oh, it's object. ऑब्जेक्ट ओनली। कुछ चेंज हुआ है क्या 19 में? क्या बोल रही है? आर्गुमेंट ऑफ टाइप वैलिडेटर mismatch boolean or null is not assignable to the parameter of abstract control option। सर एक बार चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स दिखाना। एक मिनट, टाइप प्रॉपर्टी वैलिडेटर्स और इनकम्पेटिबल। ये पहला कंट्रोल, ये दूसरा कंट्रोल, ये तीसरा कंट्रोल, इसका कंट्रोल खत्म हो गया यहाँ पे अपना फॉर्म कंट्रोल हो गया, कॉमा, फिर वैलिडेटर्स। तो सही हुई। इंपोर्ट किया है सर फंक्शन को आपने? हम्म? इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो वहां से किया, इंपोर्ट हुआ है इस फाइल में? एक काम उसको करते पास हैं, करना पड़ेगा ना सर, ये फॉर्म सेम ग्रुप का ऑब्जेक्ट। फंक्शन यही के अंदर में रख के देखते हैं। नहीं, उसको रिटर्न टाइप में कुछ तो भी गड़बड़ है, ये कैसे फंक्शन पास कर रहे हो उसका कुछ लेना देना नहीं है उसको। हम्म। नहीं, मतलब इस टीएस फाइल में इंपोर्ट हुआ है ये? ठीक है ना, ये मैंने फंक्शन यही पे यही लिखा और दिस डॉट से एक्सेस कर रहा हूँ तो भी सेम एरर है। सेम है। उसको जो अपन रिटर्न टाइप दे रहे ना, ये मिसमैच और नल इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप दिस बोल रहा है, टाइप एरर है, मतलब कुछ नहीं नहीं पास। करते। No remove function. Disturb. एक्सपेक्ट अ फंक्शन, क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट भेजो। वही सर, मैं वही कह रहा था कि इसको डायरेक्ट भेजना है, वैलिडेटर्स के साथ नहीं जाएगा ये। गड़बड़ किया तुमने। एक मिनट रुको। इसको अनकमेंट करते हैं, डायरेक्ट भेजते हैं। अब क्या बोलता है, टाइप पैरामीटर फॉर्म एंड फॉर्म आर इनकम्पेटिबल, abstract control is missing। एक और ब्रैकेट था, स्टिल एरर है, फंक्शन भी नहीं बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है, मिस आर्गुमेंट ऑफ टाइप फॉर्म कंट्रोल मिसमैच boolean null is not assignable to type abstract control option validator function। पूरी डालते हैं अपना, ये लिखा, उसके बाद ये कॉल किया।
यहाँ पे पूछ के देखते हैं। हो सकता है नए वर्जन में कुछ सर ये जो सिंटैक्स फंक्शन चेंज। बनाया ना आपने, हम्म। इसमें अपन जो पास कर रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल, मतलब अपने को पास करना होगा। जो फॉर्म आपने लिखा है ना, फॉर्म ग्रुप। हाँ, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल का क्लास आता है। बट इसने भी तो फॉर्म ग्रुप के साथ ही लिखा है ना। नहीं, अभी जब रिसेंटली मैंने एक जगह बनाया था अच्छा, तो ये कोलन वैलिडेटर फंक्शन दिया है इसने, इस फंक्शन हाँ को डेटा टाइप दिया है। वेट, कोलन वैलिडेटर फंक्शन। अब देखते पर स्टिल एरर ही आ रहा है इसको। सर। क्या बोल रहे हैं, वैलिडेटर फंक्शन। अब तो करेक्ट है ना। अब इस फंक्शन को ना उसी उसी में पास कीजिए, कंट्रोल में। ये यहाँ पे ना करते हुए हाँ, और डायरेक्ट मतलब वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी आपको ब्रैकेट में, क्योंकि आपने एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल टाइप दिया है ना। वैल्यू कैसे भेजेंगे फिर। वैल्यू के लिए क्या था, रुक जाओ इसको बाइंड, डॉट बाइंड करके दिस लगाइए सर, डॉट बाइंड करके दिस। बाइंड। डॉट बाइंड, फंक्शन नेम डॉट बाइंड, ब्रैकेट में दिस लगा दीजिए ताकि वो फॉर्म भेज देगा पूरा। दिस डॉट एम्प्लॉय फॉर्म। नहीं नहीं, हम्म। नहीं नहीं फिर सर, ये कस्टम वैलिडेटर्स डॉट होगा, एक कस्टम वैलिडेटर्स डॉट। हाँ, डॉट बाइंड। क्या राउंड ब्रैकेट के अंदर बोल रहे हो कि कहाँ पे। नहीं नहीं, ब्राउन ब्रैकेट से पहले बोल रहा हूँ सर, डॉट बाइंड। अच्छा, डॉट बाइंड। हाँ, और उसके बस के बाद पैरेंथेसिस में आप दिस भेज दीजिए, मतलब ब्रैकेट में दिस भेज दीजिए। हाँ, अभी भी जा रहा है ये। और फॉर्म में आपने फॉर्म कंट्रोल, इसको 19 के साथ पूछते हैं। बट इट शुड बी अ टाइप ऑफ वैलिडेटर फंक्शन, वो तो हमने दिया है। ठीक है, कर लेते इसको। आपने फॉर्म ग्रुप लिखा है ना। अब क्या बोल रहा है, टाइप नल, और नल की जगह एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजेंगे तो भी बोल रहा है एरर। अगर हम इसको डेटा टाइप दे रहे वैलिडेटर फंक्शन, तो इसको नल नहीं चाहिए, एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी अलाउ नहीं कर रहा है ये। अब क्या बोल रहे हैं कि टाइप एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल इज मिसिंग इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर्म ग्रुप। जो फॉर्म है ना सर, उसका टाइप फॉर्म ग्रुप नहीं होकर एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल रखना पड़ेगा। बट हमें यहाँ पे फॉर्म ही भेजना पड़ेगा ना, क्योंकि फॉर्म में से दो कंट्रोल की वैल्यू रीड करनी है हमें, राइट। तो हम्म। इसलिए फॉर्म भेज रहे हैं अपन। एक कंट्रोल हाँ, भेजेंगे मैं तो समझ दूसरे कंट्रोल की वैल्यू कैसे रीड करूँ मैं। सिंगल्स कंट्रोल थोड़ी कर रहे हैं हम। ये पहले बोल रहा है कि मिसमैच बूलियन इज नॉट असाइनेबल टू देन वैलिडेटर फॉर्म की फंक्शन। rather देन फॉर्म की वैल्यू भेजनी, वो कंट्रोल को भी भेज सकते हैं। लेकिन फिर दो फंक्शन लगेंगे ना। इसको डेटा टाइप का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको डेटा टाइप अपन ने वैलिडेटर फंक्शन दिया।
ठीक है, एनी देख के चला के देखते हैं। और यहाँ पे ऐसा यूज किया है, अभी चल गया। अब जब अपन ये वैलिडेटर का डेटा टाइप दे रहे हैं ना, इसको कुछ तो भी और रिटर्न टाइप चाहिए। अपन यहाँ पे नल भेज रहे हैं ना, इसको नल चलता नहीं है वैलिडेटर फंक्शन को, मे भी। हम्म। जो पहले ये चलता है कि नहीं वैलिडेशन, वो देखते हैं। पासवर्ड पे चेक करते पहले चलता है कि नहीं। फिर से मैंने 112233 डाला, दिस इज रिक्वायर्ड, पहले से क्यों आ रहा है? ठीक है, नहीं। HTML में अपन ने क्या भेज रहे हैं यहाँ पे? एरर फंक्शन से मिसमैच, ये रिक्वायर्ड वाला हो गया। इससे ही और एक ही ब्लॉक लगेगा। यहाँ पे मैं एरर में क्या चेक करेंगे अपन? मिसमैच है क्या, पासवर्ड रॉन्ग। ठीक है, 112233, पहले तो रिक्वायर्ड वाला आएगा। 11 नहीं काम कर रहा है, डीबग लगा के देखते हैं, कुछ एरर भी नहीं है। तो हमारे ऑन तो हो रहा है। पासवर्ड ये है, डिफरेंट है। अगर ये सेम है तो ही नल भेज रहे हैं, अदरवाइज मिसमैच चल रहे हैं अपन। दिख क्यों नहीं रहा है एरर? इसको प्रिंट करके देखते हैं एरर में क्या आ रहा है। इस सॉन्ग, ठीक है, मुझे ऑब्जेक्ट प्रिंट करना था इसलिए मैंने जेसन पाइप इंपोर्ट किया। चेक करते हैं अभी क्या आता है एरर में। एरर ही नहीं आ रहा है। यहाँ से रिटर्न तो हो रहा है, इसलिए वो बोल रहा था कि उसको कुछ तो भी और वे में चाहिए डेटा। क्या बोल रहा है, कैसे चाहिए इसको डेटा? ठीक है, ये एरर भेज के देखते फिर से। हम्म, क्या चेंज किया इसने? कास्ट कंट्रोल टू, बट इससे रिटर्न टाइप कैसे फिक्स होगा? ट्राई करके देखते हैं। चेक करते हैं अभी। और अच्छा, ये ऐसे करना है। मैंने कहा ना सर, आपको एक्सट्रैक्ट कंट्रोल ही देना पड़ेगा उसमें, कंट्रोल में।
जाने दो, मेरे को करके देखने दो पहले क्या है तो। ठीक है, बता रहा है ये तो भी नहीं हो रहा है। एंगुलर के साइट पे जाके देखना पड़ेगा, नया कुछ तो भी चेंज हुआ होगा। बट तरीका यही है। ओके, हम एक ऐसे फंक्शन बनाते हैं यूटिलिटी फाइल में, और जितने भी अपने ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स है वो ऐसे रखते हैं, और यहाँ पे जो भी अपना लॉजिक है किसी किसी फील्ड के साथ क्या क्या करना है, राइट, वो मिसमैच करके अपन ऐसा ऑब्जेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी देते वही अपन यहाँ पे एरर में से यूज करते हैं। मतलब यहाँ से जो मैं ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ ना, ये ऑब्जेक्ट मेरे एरर में आना चाहिए, बट अभी वो नहीं आ रहा है, उसके वजह से गड़बड़ है। अपन ने कंफर्म पासवर्ड पे ही लगाया ना कि पासवर्ड पे लगाया? नहीं, कंफर्म पास, फिर उसको कैसे पता चलेगा? देखो अभी जितना मेरे को समझ रहा है, अभी क्या हो रहा है, अपन ने यहाँ पे ट्रू फॉल्स तो लगाया, लेकिन कैसा पता चलेगा कि ये जो एरर है वो किस पर्टिकुलर कंट्रोल पे जाएगा? राइट, हमने ये फंक्शन लिखा, ये फंक्शन से अपन ने, ठीक है, ये रिटर्न भी किया, लेकिन अपन ने कंट्रोल तो बताया नहीं। तो ये फॉर्म लेवल पे जा रहा है कि क्या है? क्या फॉर्म लेवल का प्रिंट करके देखते हैं बड़ा। एम्प्लॉय फॉर्म डॉट एरर्स, क्योंकि स्पेसिफिक कंट्रोल हमने बताया नहीं वहां पे कि कौन से कंट्रोल का एरर है। चेक करते हैं अभी। हाँ, देखो अभी मिसमैच आया, ये समझा? इस फंक्शन में अपन ने कहीं पे ऐसा कुछ भी कोड लिखा है क्या कि कंफर्म पासवर्ड का ये एरर है? Did we write any specific logic that this error will belong to this particular control? Right? No. So this is overall the form, हमारे ओवरऑल फॉर्म में सेट हुआ है वो एरर। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे 1122 डालता हूँ तो देखो वो एरर नल हो गया। अगर मैं डिफरेंट पासवर्ड डालता हूँ फिर जाके दिख रहा है। गॉट इट? सो ये ओवरऑल फॉर्म पे गया, बट हमें अगर कंट्रोल में सेट करना है तो यहाँ पे मैन्युअली सेट करेंगे, उसका मतलब नहीं है यार। HTML का कोड कैसे दिया था इन्होंने? हाँ, करेक्ट था। ये देखो, फॉर्म लेवल पे ही एरर आ रहा था। अपन जो पहला सिनेरियो था ना वही करेक्ट था, यही करेक्ट है अपना। सिर्फ यहाँ पे फॉर्म लेवल पे ना चेक करते हुए मुझे यहाँ पे चेक करना है। मतलब पर्टिकुलर कंट्रोल पे ना चेक करते हुए ये चेक करना है। जैसे मैं करेक्ट डालता हूँ वो निकल जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पूरे फॉर्म में वो एरर सेट कर रहे हैं। ये फंक्शन में देखो हमने यहाँ पे स्पेसिफिक, वी डिडंट सेट दिस एरर इन पर्टिकुलर कंट्रोल, वी आर सेटिंग दिस, वी आर सेटिंग दिस एरर ओवरऑल द फॉर्म। ओके, so ये function where we have added overall the form, not on the specific control, but we can add it on the specific control also. Okay, because previously I have done like this on specific control also we can add it. I will check it today and then again tomorrow we will see this. But this is overall form. So overall form we are setting some errors and that we use it over here to display. Okay, clear है or got confused? Yes. Okay, so this function is actually adding error overall the form, not on a specific control. So that's why when we are reading it, we have to read overall the form, not on any specific control. Okay. सर एक से ज्यादा फंक्शंस बनाए जा सकते हैं ना इसमें? मल्टीपल फंक्शंस हम पास कर सकते हैं? हाँ, मल्टीपल फंक्शंस पास कर सकते होंगे ना वैलिडेटर। हाँ, either you can pass one function or array of multiple functions. Okay. यस। Okay. सो ये जो लास्ट वाला पार्ट था, जो लोग नए हैं नहीं समझा को तो जाने दो, फिर से एक दो बार अपन ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, अब बहुत दिनों के मैंने भी नहीं ये करके देखा था, मुझे लगा ऐसे ही होगा, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। ओके, यस चलो कल कनेक्ट करते हैं। सर, वो लीव एप्लीकेशन वाला
अरे यार वो देखा ही नहीं मैंने अब तक। कल मैं ही नहीं, प्रोडक्शन उसका इशू। आगे का सिनेरियो क्या है, मतलब वो कंफर्मेशन कैसे होगा? मुझे देखो, अपना लीव क्रिएट, एम्प्लॉय क्रिएट हो गया, उसके बाद लीव क्रिएट हो गया। अब लेट्स से तुम एम्प्लॉय हो, तुम्हारा कोई ना कोई सीनियर रहेगा, हम्म। तो वो तुमने जैसे ही लीव अप्लाई किया ना, वो लीव जानी चाहिए सीनियर के पास, और सीनियर उसको अप्रूव करेगा। तो वो लॉजिक मुझे चेक करना है कि एपीआई में लिखा हुआ है कि नहीं मैंने। वही सर, वही मतलब उसका मुझे लिंक नहीं मिल रहा है एपीआई में कि नहीं है कैसे फिर होगा। एपीआई में, तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा एपीआई वैसे, अप्रूवल का डाल के सर, और वो एडिट का आपने बताया था रिमाइंडर करने के लिए। एडिट का क्या था? कौन सा एडिट? श्रीपद सर, हम्म। वो कुछ तो एरर कौन से रहा सिनेरियो था। में देख रहे थे अपन? आपने बोला था सेशन में या हाँ याद दिलाओ, याद लेकिन करना मेरे हो। को याद नहीं आ रहा अभी कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला था अपन ने एडिट। मतलब शायद वो एडिट नहीं हो रहा था, उस कॉन्टेक्स्ट में था वो। बट कौन से पेज में क्या कर रहे थे अपन? कल के सेशन में बोला था। नहीं, फ्राइडे को बोला था। एक बार रिकॉर्डिंग देखो और बताओ मेरे को, मैं भी भूल गया कौन क्या था। तो ठीक है, देख लेना एक बार रिकॉर्डिंग, क्या सिनेरियो था वो देखो, फिर कल देखते हैं। सर वो आज प्रॉब्लम भी सॉल्व कीजिएगा ना, वो एपीआई वाली आपका हाँ सॉल्व हाँ, मिले। कोर्स वाला भी बाकी है। जी सर। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल।